So, cyclomatic processes which we are going to discuss about. This is your cyclomatic chart which is in between dry bulb temperature and specific humidity. Now various processes have been shown over here in the cyclomatic chart. First one is the sensible heating, O to A. Then it is sensible heating from O to A. When we are going from O to A, it is sensible heating because it is along with the x-axis and it is increasing over here. So a sensible heating. Then reverse direction to that, O to B. That is your sensible cooling in the reverse direction. So dBT, dry bulb temperature, increases over here and decreases in this direction. So sensible heating and sensible cooling. These are the horizontal line. Then on the vertical line, we have OC, that is humidification, because specific humidity goes on increasing along with the y-axis. Humidification is there. And O to D, reverse process, dehumidification is there. So humidification and dehumidification, 4 processes have been shown. Now next one is the OE, OF, OG and OH. These again 4 processes are there. So here OE, that is heating and dehumidification. Why heating? Because we are going in this direction, we are going along this direction, so heating is taking place. And dehumidification matlab we are going reverse in the humidification process. So heating and dehumidification. While again from O to F, that is your cooling, we are going in this direction. And humidification, we are going up. So cooling and humidification. Reverse of that, OF. Then OG, that is heating and humidification. Heating, we are going in this direction, and humidification upward. So heating and humidification. And reverse of that, again OH, that is cooling and dehumidification. कूल कर रहे हैं और नीचे जा रहे हैं, डिह्यूमिडिफिकेशन कर रहे हैं. इस तरह से हमने 8 प्रोसेसेस इसमें आपको समझाया, बताया. One was OA, that is a sensible heating. Then OB, sensible cooling. Then OC, humidification. OD, dehumidification. And again OE, that is heating and dehumidification, heating and dehumidification. And OF, cooling and dehumidification. Then OG, heating and humidification. And OH, cooling and humidification. So 8 processes have been told to you about the cyclomatic chart. These are the processes. Now we will study detail all the processes. Okay. So first, let us see sensible heating. Sensible heating. The mixture is heated without any change in the moisture content because it is going along the straight line, so moisture remains constant. The process results when the mixture is made to pass over a surface whose temperature is above the dry bulb temperature of the mixture. The heating surface may be the electric resistance, heating coil, or steam passed through the coil, or hot water passed through the coil. Now here you see, here this is the coil, this is the duct, this is the coil, and air is allowed to enter. That is the temperature of the entrance of the air, dBT1, and it is going out at dBT2. Here the coil whose temperature is dBT3, heating coil hai. Heating coil, either electric heater or boiler, pipe, or whatsoever the source may be there. On cyclomatic chart it has been shown over there. That is, the first one was your dBT1, entering of the air. Then specific humidity remain constant. So from 1 to 2 we are going, heating and air is coming out. Then 0.3, that is dBT3, that is the coil temperature which is shown over here. So
x-axis and y-axis, and this is your psychrometric chart. Now from here, if we go along the wet bulb temperature line, then we can go up to the enthalpy. Here also from the wet bulb temperature line to enthalpy, here also from wet bulb temperature line to enthalpy. So we getting the value of the enthalpy also. Now with reference to the figure 14.12, both the figure, the process of sensible heating is represented by the horizontal line 1 2 that extends from the left to right. The surface temperature of the heating coil is indicated by the point 3. Further it may be noted that है ना point 3 जो है heating coil का temperature. Air vapor mixture at dBT1 passes over a heating coil at a temperature dBT3, acquires temperature dB2 at the exit. dBT2 is less than dBT3, of course, because this is the heating coil and air is passing through that, but all the air is not passing, some air is bypassing it. So the temperature of dB2 will be always less than the temperature dBT3, that is the coil temperature. So specific humidity during the sensible heating remains constant. Of course, it is along one line, so omega 1, omega 2 all are equal. Then dry bulb temperature increases from dBT1 to dBT2, from dBT1 to dBT2, and the relative humidity reduces from phi 1 to phi 2, है ना. relative humidity की लाइन ये है, कर्व लाइन. तो पहले relative humidity 0.1 पर ये था और वो रिड्यूस होकर के इस पर आ गया 0.2 पर आ गया. The amount of heat absorbed by the mixture can be obtained from the psychrometric chart by enthalpy difference. अब जो हीट जो है बेटा, वो हीट का जो एब्जॉर्प्शन है वो 1 और 2 के बीच का है. सो एंथैल्पी से डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं. तो H इज इक्वल टू H2 माइनस H1, और ये H2 माइनस H1 जो होगा वो CPA ड्राई एयर, दो पार्ट में होगा, वेट एयर एंड ड्राई, वेट मॉइस्चर एंड ड्राई एयर. CPA dBT2 minus dBT1 प्लस ओमेगा इंटू CPV dBT2 माइनस dBT1. अब CPA CPV को एक साथ कर दिया तो CPV प्लस ओमेगा CPA प्लस ओमेगा CPV और dBT2 माइनस dBT1. दिस फैक्टर इज नोन एज द ह्यूमिड स्पेसिफिक हीट, CPM, उससे CPM से शो कर रहे हैं, एंड दैट इज dBT2 माइनस dBT1 उसके साथ है. ठीक है. Now this value of CPM is always 1.022 kilojoule per kg. It is fixed. Okay. At the exit, the air vapor mixture ideally should attain the dBT3 temperature, dBT3 of the heating coil, but it leaves at dBT2. The difference is due to the inefficiency of the heating coil, and this is prescribed by the term bypass factor and coil efficiency defined as. तो bypass factor क्या हुआ? Actually जो भी air यहाँ से enter कर रहा, all the air are not getting in contact with the coil. Some air is bypassing it. It is going from the above. So bypass is coming. That's why the temperature of the coil is not equal to the outlet air temperature, because all the air are not passing through that. So dBT2 is always less than dBT3. So bypass factor is given by dBT3 minus dBT2 divided by dBT3 minus dBT1. This is very important, and this is called bypass factor. And coil efficiency will be 1 minus bypass factor. 1 minus bypass factor, that will give you the coil efficiency. The coil efficiency is also called contact factor, है ना. मतलब कितने देर तक एयर कांटेक्ट में इसके रहा एयर कॉइल के, दैट इज also called contact factor. The sensible heat given out by the coil can be prescribed by the relation. अब coil जो heat दे रहा है, Q is equal to UAS into theta m, QAS into theta m, where U is the overall heat transfer coefficient, U, AS is the surface area of the coil, and theta m is the logarithm mean temperature difference. थीटा एम लॉगरिथम मीन टेम्परेचर डिफरेंस. तो ये चीज़ आपने उसमें भी पढ़ा होगा, हीट एंड मास ट्रांसफ़र में भी आता है. जब हम पढ़ते हैं क्या नाम है, जब हम स्टडी करते हैं हीट एंड मास ट्रांसफ़र में,
हीट एक्सचेंजर्स के बारे में। तो थीटा एम की वैल्यू क्या हुई, थीटा एम जो हो गया थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइडेड बाई लॉग बेस ई थीटा 1 अपॉन थीटा 2। दिस इज मीन लॉगरिथम मीन टेम्परेचर, मीन LMTD इसको बोलते हैं, LMTD लॉगरिथम मीन टेम्परेचर डिफरेंस। अब थीटा 1 क्या चीज़ है, थीटा 1 जो है वो डिफरेंस कॉइल का टेम्परेचर इंटू माइनस इंट्रेंस एयर टेम्परेचर, और थीटा 2 coil temperature minus outside air temperature. So theta m can be written in the form of theta 1 and theta 2, that is dBT2 minus dBT1 divided by log E dBT3 minus dBT1 divided by dBT3 minus dBT2. That can be written as dBT2 minus dBT1 divided by log E. This is your bypass factor, 1 upon bypass factor. अब पीछे अभी हम लोग ने देखा बाईपास फैक्टर क्या होता है, तो 1 अपॉन बाईपास फैक्टर हुआ ही है। नाउ Q इज इक्वल टू, Q जो था हमारा क्या था, UAS इंटू थीटा एम की जगह पर हमारी ये वैल्यू आ गई, दिस वैल्यू कैन बी पुट ओवर हियर थीटा एम। सो Q इज इक्वल टू UAS dBT2 माइनस dBT1 डिवाइडेड बाई लॉग E 1 अपॉन बाईपास फैक्टर। द हीट ट्रांसफर इज आल्सो गिवन बाई थीटा हीट ट्रांसफर MCP/dt भी होता है, M इंटू S इंटू T होता है हीट ट्रांसफर। सो दैट कैन बी इक्वेटेड विद दिस Q. सो वी हैव गॉट UA dBT2 माइनस dBT1 डिवाइडेड बाई लॉग 1 अपॉन बाईपास फैक्टर इज इक्वल टू MACPM specific heat, that the CPM we have already seen it, specific heat, humid specific heat. So equate both them, दो ये कट गया ऊपर वाला इससे, then log 1 upon bypass factor that will be given by UAS upon CMA into CPM is equal to log E. अगर इसको ऊपर हम करेंगे तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, माइनस UAS अपॉन MACPM, और log अगर हटाएंगे तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाएगा, दैट यू नो वेरी वेल, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने ये सब चीज़ें। तो बी बाईपास फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस यू एस अपॉन एम ए इंटू सी पी एम, और यू ई रेज पावर माइनस यू एन आ गया, एन फैक्टर एक आ गया यहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा, एन इंटू ए एस डिवाइडेड बाई एम ए सी पी एम, एम ए इंटू सी पी एम, दैट इज ई रेज पावर माइनस के, दिस कॉन्स्टेंट इज के, ओके, वेयर एन इज द नंबर ऑफ द कॉइल, AR is the surface area of the coil, and the value of factor K is constant for the given coil surface and given air flow quantity. K constant रहता है. The above expression shown that bypass factor decreases with increase in the surface area. Of course, bypass factor decrease करेगा अगर surface area increase करेगा. With the surface area, okay, increase in depth of the coil and with the decrease in the velocity. अब velocity यहाँ पर mass क्या होगा, mass is equal to density into area into velocity. Further, the following correlation exists between B1 को शो किया bypass factor of the single depth coil, एक coil का bypass factor, and Bn bypass factor of n depth मतलब कई कॉइल लगे हुए, तो Bn जो होगा वो B1 रेज पावर n क्या है, नंबर ऑफ द डेप्थ या नंबर ऑफ द कॉइल, कितने डेप्थ तक कॉइल है, कितने डेप्थ कॉइल के यूज़ किए गए हैं। द फैक्टर 1 माइनस BPF is mass actually coming in perfect contact with the coil. The bypass factor is an important tool and for the measuring the performance of the heating coil. The coil gives better performance with lower bypass factor. जब bypass factor कम होगा तो performance better होगा. Now come on the numerical side, let us see. One numerical for single depth coil, the bypass factor is stated to be 0.75 दिया हुआ, ठीक है, सिंगल डेप्थ coil only one. What will be the bypass factor for 4 depth coil?
4 कॉयल अगर लगे हुए तो। फिर व्हाट नंबर ऑफ डेप्थ ऑफ द कॉयल विल बी रिक्वायर्ड इफ बाईपास फैक्टर इज एन एयर कंडीशनर, बाईपास फैक्टर इन एन एयर कंडीशनर इज 0.2। ठीक है, नाउ लेट अस सॉल्व द न्यूमेरिकल। इन्वोकिंग द रिलेशन, अभी हमने रिलेशन ऊपर में देखा था, बी एन इज इक्वल टू बी वन रेज पावर एन, तो बी एन इज इक्वल टू बी वन रेज पावर एन। बी बाईपास फैक्टर 4 डेप्थ कॉयल इज देयर, तो एन की वैल्यू 4 हो गई, तो बी फोर इज इक्वल टू, बी वन हमको दिया हुआ बाईपास फैक्टर दे रखा है इसमें क्वेश्चन में, बाईपास फैक्टर इज 0.75, तो 0.75 रख दिया हमने, उसको पावर 4 कर दिया, और यहाँ से हमको मिल गया द नंबर ऑफ डेप्थ ऑफ द कॉयल बाईपास फैक्टर, द नंबर ऑफ डेप्थ फॉर ए बाईपास फैक्टर ऑफ 0.2 जब बाईपास फैक्टर है तो हमारे पास ये रिलेशन हो गया 0.2 इज इक्वल टू बाईपास फैक्टर 0.75 रेज पावर एन। तो इससे हमने फिर n की वैल्यू निकाल लिया, n की वैल्यू 0.2 अपॉन लॉग 0.2 अपॉन लॉग 0.75, यहाँ से हमको n की वैल्यू निकल गई, दैट इज़ द नंबर ऑफ द डेप्थ ऑफ द कॉयल। इसमें पूछ रहा है व्हाट नंबर ऑफ द डेप्थ ऑफ द कॉयल विल रिक्वायर्ड इफ़ द बाईपास फैक्टर ऑफ एन एयर कंडीशनर 0.2, बाईपास फैक्टर 0.2 दे दिया है, तो 0.2 इज इक्वल टू 0.75 तो हमारे पास पहले से ही मालूम था। डेप्थ ऑफ द बाईपास फैक्टर, एक कॉयल का डेप्थ का बाईपास फैक्टर 0.75 था, यहाँ से हमने n की वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल लिया। ठीक है, क्लियर। सो इस टाइप के न्यूमेरिकल छोटे मोटे आ सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज योर दैट कैलकुलेट द बाईपास फैक्टर and the contact factor for the air conditioner coil used to bring the condition of outdoor air 40 degree centigrade dVT 30% RH to the required comfort condition 22 degree centigrade dVT and 60% RH. The data pretend to the coil is overall heat transfer coefficient 850 kilojoule per meter cube hour degree. Then surface area of the coil provided per row 1.25 meter square. Then depth of the coil 4. Then volume of the free air passing over the coil is 60 meter cube per minute. पर मिनट को अगर आप आवर में चेंज करेंगे तो 60 into 60 हो जाएगा। At outdoor air condition of 40 degree dVT and 30% RH, the specific volume of the air, ये हमको मिलेगा साइक्रोमेट्रिक चार्ट से निकालेंगे, तो उससे हमको स्पेसिफिक वॉल्यूम डायरेक्ट मिलेगा 0.908 मीटर क्यूब। तो अब मास ऑफ द एयर निकल जाएगा, चूँकि टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है, स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया हुआ है, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम, इट विल गिव द मास ऑफ द एयर। The bypass factor of the coil is prescribed by the relation। अब ये पहले हमने रिलेशन पढ़ा था बाईपास फैक्टर के लिए, नेक्स्ट पिछले पेज पर देखेंगे अगर आप, तो दैट वाज योर बाईपास फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज पर माइनस UNAR अपॉन MA CPM, वही चीज़ यहाँ यूज़ किया गया है। बाईपास फैक्टर इज इक्वल टू UNAR डिवाइडेड बाई MA इंटू CPM, सबकी वैल्यू हमको मालूम है। सब्सटीट्यूटिंग द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू वी गेट बाईपास फैक्टर ई रेज पावर, यू की वैल्यू हमको दी हुई है 850, एन की वैल्यू 4 कॉयल है, 4 डेप्थ है, ए एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है, एम ए मास अभी हमने कैलकुलेट करके निकाला है, और सी पी एम की वैल्यू स्टैंडर्ड 1.022। यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद हम निकाल लेते हैं बाईपास फैक्टर इक्वल टू 0.35, और कूलिंग कॉन्टैक्ट फैक्टर क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट फैक्टर इज 1 माइनस बाईपास फैक्टर, दैट इज 0.65। ओके, so this numerical is very simple and I think it is very clear also. Then comes another numerical, let us see. The moist air at 10 degrees centigrade and 50% relative humidity enters a steam heating coil at the rate of 50 kg per second and temperature at exit is noted at 30 degree. Determine sensible heat transfer. Next, mass flow rate of the steam if it enters saturated at 100 degree centigrade and condensate leaves at 65 degree centigrade. So we have to find out these two factors. Then let us solve the numerical. Let us first see it on the psychrometric chart. Point 1,
that is given over there, 0.1, 10 degrees centigrade, 50% RH. Okay, then we are going to the 0.2 heating, that is 22 degrees centigrade. 22 degrees centigrade, that was your 22 degrees centigrade, sorry, 30% RH and heat 50 gram, and we are at exit node 30 degrees centigrade. So straight line we are going to the dBT2, 30 degrees centigrade. Okay, so line 1 to represent the sensible heating of the air फ्रॉम द चार्ट H1 की वैल्यू हमको मिल गई, H2 की वैल्यू डायरेक्ट हमको मिलेगी चार्ट से, ठीक है। और सेंसिबल हीट ट्रांसफ़र MA इंटू H2 माइनस H1, मास हमको मालूम है, मास ऑफ द एयर, 50 दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है, 50 kg पर सेकेंड दिया हुआ, तो 50 kg पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई H2 माइनस H1 निकाल लिया हमने। From the steam table, enthalpy of the saturated steam at 100 degrees centigrade Hg is given over here, and enthalpy of the condensate at 65 degrees centigrade 272. This is from the steam table we can find out. So after finding it out, we can say that then steam mass flow rate Ms is equal to Q upon Hg minus Hf. तो Q हमको दिया 1025, Hg 2676 minus 272, and we get the value of 0.426 kg per second. Okay, steam flow rate ही हमको निकालना था. Another numerical you see, a sample of atmospheric air 15 degree dry bulb temperature and 10 degree wet bulb temperature is made to enter a heating coil whose surface temperature are 40 degrees centigrade. Using psychrometric chart, determine dry bulb temperature and wet bulb temperature and relative humidity of the air exit from the heating coil. And second part, heat added into the air. It may be assumed that the heating coil has a bypass factor 0.5. bypass factor दे दिया हमको. तो ये क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर, ये इंट्रेंस पॉइंट है यहाँ से, और ये आपका कॉइल का टेम्परेचर 40 डिग्री है, और एयर जो आउटलेट हो रहा है उसका टेम्परेचर जो है dBT2 है. यहाँ से डायरेक्टली हम इंथैल्पी इसका कैलकुलेट कर सकते हैं. सो मार्क 0.1 करस्पॉन्डिंग टू ड्राई बल्ब टेम्परेचर 15 डिग्री एंड वेट बल्ब टेम्परेचर 10 डिग्री. 0.1 मार्क हो गया यहाँ पर. ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन constant and specific humidity 1 at 3 that extend from the left to the right and intersect the vertical line drawn at 40 degree centigrade. Temperature of the heating coil दिया हुआ हमको 40 degree centigrade पर, straight line खींच दिया हमने, 0.3 हमको locate हो गया. We know that the bypass factor is given by dBT3 minus dBT2 upon dBT3 minus dBT1. वैल्यू रखा हमने, बाईपास फैक्टर दिया हुआ 0.5, हम इससे dBT2 निकाल सकते हैं, वैल्यू ऑफ द एयर विच इज़ गोइंग आउट. dBT2 की वैल्यू डायरेक्ट हमको मिल गई. दिस हेल्प्स टू लोकेट द पॉइंट 2 ऑन द सेंसिबल हीटिंग लाइन. 0.2 का हमको लोकेशन पता चल गया. द फॉलोइंग पैरामीटर कैन देन बी रीड फ्रॉम द साइक्रोमेट्रिक चार्ट. वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ एयर लिविंग द कॉइल 2 dBT2 डायरेक्ट हमको मिल जाएगा. वेट बल्ब टेम्परेचर यहाँ से जो WBT की लाइन कट करेगी उससे हमको डायरेक्ट मिल जाएगा. देन रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर लिविंग द कॉइल एट 0.252 हमको सीधा मिल जाएगा, जो इस पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कर्वेचर जहाँ कट करेगा. देन एंथैल्पी ऑफ द एयर व्हेन लिविंग द कॉइल एट 0.2 H2 इज़ 45 किलोजूल पर kg ड्राई एयर. H2 की वैल्यू डायरेक्ट हमको मिल गई यहाँ से. एंड एंथैल्पी ऑफ द एयर व्हेन एंटरिंग the coil at 0.1 H1 is 31.5 किलोजूल पर kg. H1 सब वैल्यू हमको डायरेक्ट यहाँ से मिल जाएगी. एंड देन द हीट एडेड क्या हो जाएगा, H2 माइनस H1, हीट टोटल हीट H2 माइनस H1, तो वो हम घटा देंगे. H2 और H1 की वैल्यू मालूम है हमको, घटा दिया हमको, सीधा मिल गया हमको. दैट इज़ द हीट एडेड टू द एयर को जो हीट हम ऐड कर रहे हैं वो हमको डायरेक्टली यहाँ से मिल गया. सो दिस वॉज योर सेंसिबल हीटिंग. नाउ इफ़ देयर इज सेंसिबल कूलिंग ऑल्सो, another part is sensible cooling. What is that sensible cooling? The mixture is cooled without any change in the moisture content. The process results when the mixture is made to pass over a surface whose temperature is below the dry bulb temperature of the mixture. The cooling surface may be
maybe the cooled water or gas flowing through the coil, or refrigerant at low temperature in the coil of the evaporator of a vapor refrigeration system. ठीक है, अब यहाँ पर कूलिंग हो रहा है. नेक्स्ट पेज. Here we are cooling, we are doing the cooling system. So we have got, again, duct is there, coil is there, temperature 3 of the cooling coil, and air entering DBT1, and DBT3 is the temperature of the coil. Now here DBT2 temperature is now higher than the temperature of the DBT3. Here it is more than the temperature of the DBT3 because it is cooling coil, temperature is very less, lot of air is bypassing it, so temperature is your DBT2, that is less than this one. It has been shown on the psychrometric chart also that we have got DBT1, DBT2, DBT3. See, now cooling, so in the reverse direction, 1 say 2, 2 say 3, and all factors of enthalpy can be find out from the psychrometric chart. Okay, but one more important thing is that specific humidity remains constant throughout. So with reference to this figure, the process of sensible cooling is represented by the horizontal line 1, 2, and that extend from right to left. The surface temperature of the cooling coil is indicated by 3. Further, it may be noted that air vapor mixture at temperature DBT21 passes other a cooling coil of temperature DBT3 and acquires temperature DBT2 at the exit. DBT2 is more than the DBT3. Okay, that I have told earlier. This is more than the DBT3 temperature. Then specific humidity during the process sensible cooling remains constant. W1 is equal to omega 1 is equal to omega 2, and dry bulb temperature decreases from DBT1 to DBT2, and relative humidity increases from phi 1 to phi 2. Here you see, first one is the here, second one is here. So relative humidity is increasing from here to here. Okay. The amount of heat rejected by the mixture can be obtained from the psychrometric chart by the enthalpy difference H2 minus H1, same चीज. Alternatively, it can be calculated from the relation H is equal to H1 minus H2. H1 is more over here. अभी H1 अब यहाँ ज़्यादा हो गया हमारे पास. H1 minus H2 CPA DBT1 minus DBT2 plus omega CPV, that is the vapor, dry air, and vapor portion DBT1 minus DBT2. So that can be equal to CPA plus CPV, एक ब्रैकेट में हो गया ओमेगा इंटू CPV, और दूसरे में DBT1 माइनस DBT2. नाउ दिस इज द ह्यूमिड स्पेसिफिक हीट CPM, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 1.022 किलोजूल पर kg K. At the exit, the air vapor mixture ideally attain temperature of DBT3 of the cooling coil, but it leaves DBT2. The difference is due to the inefficiency of the cooling coil. This is prescribed by the term bypass factor and coil efficiency defined. Coil efficiency, तो यहाँ पर bypass factor फिर आ गया, क्योंकि all the air is not passing through the coil, so bypass factor is coming over here. So bypass factor is given over here equal to DBT2 minus DBT3 divided by DBT1 minus DBT3. Because DBT3 temperature is down, it is less than your both the temperature. DBT2 is at higher temperature than DBT3. DBT1 is also at higher temperature than DBT3. So that's why DBT2 minus DBT3, higher one minus lower one, and DBT1 minus DBT3. So in that way, that gives the bypass factor, and coil efficiency, of course, 1 minus bypass factor standard. So we can get 1 minus bypass factor like this. Now a small numerical is there. Atmospheric air at 35 degree DBT and 55% relative humidity has been cooled to a state corresponding to 25 degree DBT and 50% RH. Determine the capacity of the refrigerating machine if it is to handle 125 meter cube of air per minute at the initial stage. Referring to figure is there. Here figure is there.
So see the initial state 1 to dBT1 is equal to 35 and 555, and local point and locate point 2 by drawing horizontal line through the point 1 such that dBT2 is 25 and phi 2 is your, it is given over there, phi 2 is given 50%. So here we can draw it. See the figure now. Figure 1, 2, part 1 and 2. 1 is your H1 85.8 and H2 49.8. Corresponding to the point, we can find out the specific volume also. And now mass of the air cooled can be find out. Volume is given 125 meter cube in the question. So M1 MA, mass of the air, can be find out, and that is coming 138.38. Now heat recovered by the refrigerating machine, that is MA into H1 minus H2, and that gives 138.38 my ब्रैकेट में H1 minus H2 लिख दिया वैल्यू हमने. फिर since 1 ton of refrigeration is equivalent to 210 kilojoule per minute, so graphically capacity of the refrigerating machine, total heat divided by 210, and we get 23.72 tons. This we are getting. So they have asked two things. 2 things have to be find out. So we have determined the capacity of the refrigerating machine if it is to be handled 125 meter cube of the air per minute at a initial stage, है ना. तो हमको दो चीज़ निकालनी थी, दो चीज़ हमने निकाला. टोटल हीट निकाल लिया और उसके बाद रेफ्रिजरेटिंग मशीन की कैपेसिटी निकाल लिया. टोटल हीट डिवाइडेड बाय योर 210 is the kilojoule per minute, that is the equivalent to 1 TR. So we can find out the value of the capacity of the machine. That's all for today. Thank you.